Hello everyone, myself Monica. I want to share my views on chapter number 4 of History of Class 12th, Thinkers, Beliefs and Buildings, Cultural Development. Okay, before starting the concept, I want to share some key concepts in nutshell. Number 1, building of Sanchi, Kanakheda are the most wonderful ancient building in the state of Bhopal. Here, it means that Kanakheda, building of Sanchi, what's the name is Kanakheda. It's a wonderful ancient building where it is exist in Bhopal. So here the question has arisen that which one is the famous stoop name in which city? कौन सी सिटी में है? भोपाल में. What's the name? Kanakheda. Building of Sanchi, Kanakheda. Okay. Now the second point, in the reconstruction of the history of India from 600 BCE to 600 CE, the historian took the invaluable information from Buddhist, Jain and Brahminical text. Here, in this point, historian इतिहासज्ञ ने कई तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गैदर की. कहाँ से? बौद्ध टेक्स्ट से, जैन टेक्स्ट से और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से. ओके. एंड इन विच सेंचुरी, इन विच डेट? 600 BCE to 600 CE. Here I want to share some information that what is the meaning of BCE and what is the meaning of CE. BCE means before common era. It means that before the birth of the Jesus Christ, and CE means common era. It means that when the date is marked or after the birth of the Jesus Christ. Okay. Now the third point, beside these texts, temples, स्तूप्स, monuments etc. provide authentic information. बौद्ध, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अलावा टेम्पल्स, स्तूप्स और मोनूमेंट्स के द्वारा भी जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर की गई. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, here it is the very important point, the rulers of Bhopal, Shah Jahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum played a significant role in the preservation of Sanchi Stoop. Okay, in this point it means that Bhopal's ruler Shah Jahan Begum and his successor Uttaraधिकारी Sultan Jahan Begum has played a significant role, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया. In which state? Preservation of Sanchi Stoop, because the preservation is very important of our ancient monuments. Okay, so who played a here the question has a reason of 1 marks, that who played a great role in the preservation of Sanchi Stoop? Shah Jahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum. Okay, now the fourth point is Anas, the new sect that emerged in India in 6th century BCE. Buddhism and Jainism were most popular. In this point, I want to say that the new sect is the new community, एक नया संप्रदाय. A new sect has originated, a new community has originated. Anas, Buddhism and Jainism are originated in 6th century. Here one question has also arisen of 1 point, that in which century the Buddhism, Jainism and Anas originated in 6th century. Okay, now the sixth point is Lord Mahavira is regarded as the real founder of Jainism. Here also the 1 marks question arise, that name the founder of the Jainism. It's the Lord Mahavira. Okay. Number 7, the founder of Buddhism was Lord Buddha. Here also the question has arisen that name the founder of Buddhism, which is Lord Buddha. Okay, तो Lord Buddha ने बुद्धिज्म की उत्पत्ति की है. Okay, now 8th point, Jainism remained continued to India but Buddhism spread to other countries. Jainism सिर्फ भारत तक ही रहा but Buddhism other countries में भी फैला. Number 9, Ashoka and Kanishka spread Buddhism in distant lands. Here अशोक और कनिष्का, सम्राट अशोक और कनिष्क
ने जो है बुद्धिज़्म को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्राट अशोक के बेटे और बेटी दोनों ने श्रीलंका में जा कर के जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बौद्ध धर्म को स्प्रेड करने में। ओके, नाउ हियर द क्वेश्चन हैज अरीजन दैट नेम द रूलर्स who spread Buddhism in different areas or countries. So which one is Ashoka and Kanishka? Number 10, during this period, that is 600 BC to 600 CE, two Brahmanical sects, Vaishnavism and Shaivism, made considerable progress. These are the two traditions in modern Hinduism. It's very important that name the two traditions in modern Hinduism. The two traditions are Vaishnavism and Shaivism, and in which date, in which period they originate. The date is 600 BCE to 600 CE. The question has arisen here of 1 marks that name the two traditions of Hinduism. So what's the tradition? Vaishnavism and Shaivism, and in which date they come into exist? 600 BCE to 600 CE. Two Brahmanical sects. Okay, now the next point is the Rig Veda is a collection of hymns, praise of many deities like Agni, Indra, Som. Okay, Rig Veda is a collection of hymns. बहुत सारे hymns की collection है Rig Veda. Now the next point is the basic philosophy of Jainism already existed in North India even before the birth of वर्धमान महावीरा. ओके, नाउ हियर तो जैनिज्म की फिलॉसफी नॉर्थ इंडिया तक भी फैली थी एंड बिफोर दी बर्थ ऑफ वर्धमान महावीरा के बर्थ से पहले ही पूरे नॉर्थ इंडिया में ये फैल चुकी थी. दीज आर दी सम की कंसेप्ट्स. नाउ आई हैव टेकन the concept of Buddhist tradition, sacrifices and debates. Before explaining these, I want to share some views. Buddhist tradition means बौद्ध धर्म की परंपराओं ने किस तरह से उस समय की सेक्रीफाइसेस को चैलेंज किया, किस तरह से डिबेट किया, इसके पॉइंट्स मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. और दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Number 1, Tyre mid first millennium BCE is often regarded as a turning point in world history since it saw the emergence of thinkers like Zarathustra in Iran, Kong-ji in China, Socrates, Plato, Aristotle in Greece, and Mahavira and Gautama Buddha in India. Okay, here the world history has taken a turning point. There is an emergence of thinkers. Why there is emergence of thinkers? Because they want to change the people point of view, because people want to sacrifice. People has to decide to order to Brahman's order. कैसे ब्राह्मणों के ऑर्डर्स को मानना है. एंड बौद्धिज्म इज नॉट लाइक दैट. बुद्धिज्म क्या पॉइंट ऑफ व्यू, बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स कुछ और हैं. सो सम थिंकर्स अराइज एट दैट टाइम एंड दे वांट टू चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल. एंड द emergence of thinkers like Zarathustra in Iran, Kongji in China, Socrates, Plato, Aristotle in Greece, Mahavira and Gautam Buddha in India. They played a very important role to change the thinking of the people. Okay, now number 2, they try to understand the mysteries of existence and the relationship between human beings and the cosmic, connected with the whole universe order. Here the mysteries of existence, they want to understand the mysteries of existence. अस्तित्व के रहस्य को वो समझना चाहते थे. एंड कॉस्मिक ऑर्डर, यूनिवर्स और ह्यूमन बीइंग, पूरे ब्रह्मांड और ह्यूमन बीइंग के बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज़ को वो समझना चाहते थे. ओके, पूरे उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एग्जिस्टेंस क्या है, उसको वो समझना चाहते थे. नंबर 3, देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस of thoughts, religious beliefs and practice. All these we know from Rig Veda, which compiled between 1500 and 1000 BCE. Okay, what is the pre-existing tradition?
प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन मीन्स जो पहले से ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, like thoughts, religious beliefs, practice, because people believe that religious beliefs, practice, thoughts, उनके ऐसे विचार थे. And here the question has a reason that when did Rigveda compiled? Rigveda compiled between 1500 and 1000 BCE. Okay, now number 4 point, sacrifices were performed by the head of the household for the well-being of domestic unit 1000 BCE to 500 BCE. Here because people's thinking has been not changed, and they believe in sacrifices, that by doing the sacrifice many things are to be gathered. Okay, so heads of the family perform the sacrifice function, and this was done in which date? 1000 BCE to 500 BCE. Okay, now the fifth point is more elaborate sacrifices like Rajshu and Ashwamedh were performed by the chief and kings with the help of Brahmana. कई तरह के राजस्व और अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण पृष्ठ की सहायता से राजाओं के द्वारा और मुखियाओं के द्वारा किए जाते थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, द सिक्स्थ पॉइंट इज, lively discussion and debates took place in Kutgrahshala, a hut where traveling mendicants took shelter. Here, this one is the place, Kutgrahshala, where the lively discussions and debates were taken place. Okay, जहाँ पर discussions होते थे, debates होते थे. Here the question has arisen. Two questions have arisen, that what is the Kutgrahshala? तो it is a hut where traveling mendicants took shelter, जहाँ पर भिक्षुक लोग आकर के भिक्षुक यात्री आकर के रहते थे. What is Kutgrahshala? And other question is that name the place where lively discussions and debates were taken. Okay, तो which one is the place? Kutgrahshala, जहाँ पर डिस्कशंस और डिबेट्स चलते थे. एंड व्हाट इज Kutgrahshala? ए हट वेयर ट्रैवलिंग मेडिटेंट्स टुक शेल्टर. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, थिंकर लाइक महावीर एंड बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास. उन्होंने वेदास की अथॉरिटी को चैलेंज किया. ओके, तो नाउ द वेदास आर ऑफ 4 टाइप, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद. ओके, एंड दे चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ वेदास, 4 टाइप्स ऑफ वेदास. ठीक है. And number 8. Now Rigveda consisted of hymns which were chanted when sacrifices were performed, where people prayed for cattle, sons, good health and long life. Here Rigveda consisted of hymns. How many hymns? 1028 hymns, and these hymns are called suktas. And here sacrifices were to be performed. बलिदान दिए जाते थे. प्रेड फॉर, किस चीज़ के लिए? पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ. एंड दीज हाइम्स 1028 हाइम्स वर कॉल्ड सुक्तास. एंड देर इज ए कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स. collection of 10 books are called mandals. Okay, now number 9, many ideas found in Upanishads 6th century BCE shows that people were curious about the meaning of life, the possibility of life after death and rebirth. Okay, here the question, first of all the question has arisen ki how many Upanishads are there, and in which and when the Upanishads come into existence. Upanishads come into existence in 6th century. Okay, now how many Upanishads are there? More than about 200 Upanishads are there. Okay, now, and what does it means? Curious about the meaning of life, जीवन के रहस्य को जानना चाहते थे. The possibility of life after death and rebirth, डेथ और रिबर्थ के पॉसिबिलिटी के बारे में जानना चाहते थे. पुनर्जन्म क्या है, मृत्यु की संभवता क्या है, जीवन की संभवता क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, उसके बारे में वो जानना चाहते थे. ठीक है. नाउ नंबर 10, thinkers were concerned with the understanding and expressing the nature of the ultimate reality. Emergence of thinkers are there, and thinkers want to concern
the nature of ultimate reality, कि what is ultimate reality, what is the supreme power, what is the final power, what is the fundamental power. फंडामेंटल पावर क्या है, सुप्रीम पावर क्या है जो ये चीज़ को करने पर उन्हें मजबूर कर रही है. ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है कि हम उन्हें बदल सकें, उनकी थिंकिंग को चेंज कर सकें. व्हाट इज़ द फंडामेंटल पावर, फंडामेंटल पावर क्या है, फाइनल पावर क्या है, सुप्रीम पावर क्या है. दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी. हियर द क्वेश्चन हैज़ अ रीजन. व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी. अल्टीमेट रियलिटी इज ए फंडामेंटल पावर ऑफ द पोटेंशियल. आपका पोटेंशियल क्या है, रियलिटी, फंडामेंटल पावर, सुप्रीम पावर, लाइक दैट. ओके, नाउ नंबर 11, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन एज मैनी एज 64 सेक्ट और स्कूल्स ऑफ थॉट्स. बुद्धिस्ट टेक्स्ट कितने हैं, 64 हैं. ओके, नाउ number 12, they also emphasized individual agency, suggesting that men and women could strive to attain liberation from the trial and tribulation of worldly existence. Individual agency, they also emphasized. Here all the thinkers emphasized on individual agency. What is the meaning of individual agency? Means people has to act its own on their behalf. अपने आप काम करना है, अपनी पावर के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से. ओके, suggesting that men and women. So what is individual agency? Here the question has a reason that what is the individual agency? Means that people have to act on their own behalf. अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करना है. And women strive to attain liberation from trial and tribulation of worldly existence. ओके, और men and women को वर्ल्डली एग्जिस्टेंस से, सांसारिक कार्यों से स्वतंत्रता के लिए वो स्वतंत्रता चाहिए थी. इसके लिए वो क्या कर रहे थे, विरोधाभास कर रहे थे. कौन, बौद्ध धर्म के जो थिंकर्स थे. ओके, नाउ द नंबर 13, दिस वाज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू ब्राह्मणिकल पोजीशन वेयर एन इंडिविजुअल existence were thought to be determined by his or her birth in a specific caste or gender. This is one contrast to ब्राह्मणिकल पोजीशन. ब्राह्मणों की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी. द पोजीशन ऑफ द ब्राह्मण इन डेंजर. ओके, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठ रहे थे. बिकॉज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण द स्पेसिफिक कास्ट जो बर्थ से है वही कास्ट होती है, but it is in great danger. Okay, now it is the some few points of Brahminical tradition, Buddha both traditions. Okay, now the next point is the Buddha, his entitlement and teaching. Now I want to share some views on Buddhism and Buddha's Lord Buddha and their teaching. Okay, now the number 1, the teaching and message of Buddha spread across the subcontinent and beyond through Central Asia to China, Korea and Japan, through Sri Lanka, across the seas to Myanmar, the one of Thailand and Indonesia. He was the one of the most influential teacher of that time. बौद्ध धर्म कहाँ से कहाँ तक फैला, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया. ओके, नाउ एंड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा was the influential teacher of that time. Number 2, Siddhartha was the son of chief of Sakya clan. He was deeply shocked when he saw an old man, sick man and a corpse. He left the palace and set out in search of his own truth. Siddhartha. Here the question has a reason of 1 marks that what is the name of the Lord Buddha? Original name of the Lord Buddha. The original name of the Lord Buddha is Siddhartha. And from कौन से वंश से थे वो, साक्या क्लैन से थे. ओके, he was deeply shocked. उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ when he saw an old man, sick man and corpse, and he left the palace and set out in search of his own truth. इन सब को देख करके उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और वो सच्चाई की राह पर, सच्चाई की खोज में निकल पड़े. ओके, नाउ
After attaining enlightenment, he came to be known as Buddha or the enlightened one. ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उनका नाम बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा पड़ा और द अनलाइटेंड वन. द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्मा और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग. और पूरा जीवन उन्होंने धम्मा, धर्म के बारे में और पाथ ऑफ राइटियस लिविंग, सही तरह से जीवन जीने की बात कही. ओके. हिज टीचिंग्स क्या हैं, उनका ज्ञान क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं. बुद्धा's टीचिंग हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज फाउंड मेनली इन द सुत्त पिटिका. बुद्धास की टीचिंग, शिक्षाएं जो हैं वो कहाँ से हमें मिलती हैं? सुत्त पिटिका से. ओके. एंड नंबर ए, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द वर्ल्ड इज transient anika and constantly changing, and it is the soulless anant. Within this transient world, sorrow dukh is intrinsic to human existence. The first point is the world is transient anika. Transient means unstable. World is unstable. Unstable है, unpermanent है, ये constantly change होता रहता है. ओके. एंड soulless अनंत, इस अंत का कोई छोर नहीं है. ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है. इन दिस ट्रेंजेंट वर्ल्ड सोरो दुख इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, ह्यूमन के आंतरिक मन में सिर्फ दुख का वास है. बिकॉज द वर्ल्ड इज ट्रेंजेंट, अनस्टेबल है, अनपरमानेंट है, इस वजह से. ओके. नाउ number 2, Buddha emphasized individual agency and righteous action as the means to escape from cycle of rebirth and retain realization existing of and nirvana, literally the existing of ego and desire, and thus the cycle of suffering for those who renounce the world. बुद्धा ने किस चीज़ पे जोर दिया? इंडिविजुअल एजेंसी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इंडिविजुअल एजेंसी इज दैट people has to act its own potential, its own behalf. अपने आप काम करना है, righteous action, अपने आप अच्छे से काम करना है, धर्म का काम करने हैं. means to escape from cycle of rebirth, पुनर्जन्म के उससे बचना है. and attain self realization. Self realization is the main in the teaching of Buddhism. Okay. Individual agency, self realization, escape from cycle of rebirth, nirvana. These are 3 or 4 points in the teaching. Okay. self realization मतलब आत्म विश्वास, आत्म अनुभव, ये चीज़ें होनी